एकेडमी की एग्जामिया टेक्निकल एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एग्जामिया की टेक्निकल एकेडमी में CIT थर्ड ईयर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर के पास पेपर्स 2022 के पेश कर रहा हूँ, जिसमें पहला पेपर जो है आपके सामने जो पेश किया जा रहा है वो cit-333 ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो CIT ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हैं। ये पेपर आपका जो ना वो अबाउट ये 2 आवर्स का पेपर है, 2.5 आवर्स का पेपर है। इसमें सबसे पहले 25 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंटरप्ट, राइट टू फंक्शन ऑफ इंटरप्ट्स, नेम एनी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट एनी 4 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, define virtual memory, define paging, define swap file, what do you mean by system call, define shell, define directory, what does control X command do, what is memory management, what is Unix file system, write any 2 function of system program, what do you mean by recovery, what is shell prompt। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 100 क्वेश्चन के पेपर में आप 25 क्वेश्चन आपने अटेंड करने हैं। तो व्हाट इज़ VI एडिटर, व्हाट इज़ कमांड मोड, डिफाइन इंसर्ट मोड, व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज़ रियल टाइम परफॉर्मेंस, नेम एनी 2 यूनिक्स बैकअप टाइप्स, लिस्ट टाइप ऑफ शेल। तो ये हमारा जो ना वो पेज नंबर 1 है पेपर का। अब इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ CH मोड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ MKDIR कमांड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CP कमांड, व्हाट डू यू मीन बाय DMA, राइट टू फीचर ऑफ Linux, डिफाइन UUCP, व्हाट इज़ टर्मिनल, डिफाइन ट्रबल शूटिंग, राइट सिंटैक्स ऑफ टच कमांड, what is next है जी, what is kernel, write to access control commands, what are FTP backups। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, explain Unix file types in detail, explain hierarchy of storage devices, write the note on following interrupts and system calls, what is shell, explain its types and command, explain Linux backup types। तो ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर था। नेक्स्ट हमारा पेपर है जी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थर्ड ईयर का cit-344। ये आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पेपर है। तो ये भी 2.5 घंटे का पेपर है। इसमें भी आपने 25 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 37 होंगे। तो राइट सम इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, enlist different application of graphic designs, write a note on RGB color mode, what is function of lasso tools and name them in Photoshop, what does stand for PNG and TIFF, write short note on crop tool in Photoshop, write a note on pixels, define vector image and bitmap image, write 2 method to add layers in Photoshop file, what is use of filter, list name of function and 2 filters in Photoshop, write purpose of curved, smooth and symmetric nodes in CorelDRAW, write a short note on light effects in Photoshop, how to apply text wrap in Photoshop, how to apply gradient color on the image in Photoshop, what is shortcut to add new layer in Photoshop file, what are the uses of CorelDRAW in graphic design, write a short note on drawing polygon and star in CorelDRAW, write a short note on crop and knife tool in CorelDRAw। तो इसी तरह जना वो ये टोटल 25 नेक्स्ट जो पेज है हमारे पास, इसमें जना वो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ AutoCAD and list the formats of AutoCAD drawing, what are the steps of units setting in AutoCAD, what is the purpose of setting ortho mode and AutoCAD drawing, right step to draw any
an arc using the stored content. Question number 30 है, write step to draw it using 31 zoom command है, 32 pan command और इसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसके बाद जो है ना मूव कमांड और उसको कैसे यूज़ करना है, ट्रिम और उसका यूज़, उसके बाद ब्लॉक कमांड कैसे ब्लॉक बना सकते हैं हम, उसके बाद रोटेट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, रोटेट कमांड को कैसे यूज़ करना है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विल कम लिखने हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइंस, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फोटोशॉप, डिफरेंट what are the important features of Photoshop and different color modes in Photoshop। और नेक्स्ट पेपर है जी cit-324, define domain user account, what is primary domain controller, what is ping command, what is different between file and folder, define digital signal, define work group, what is NTFS, what are Windows Server 2008 tools, system requirement for Windows Server 2008, what is the routing table, what is the domain name server, इसको DNS भी कहते हैं। और इसी तरह व्हाट इज़ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, डिफाइन फॉरेस्ट इन नेटवर्क, व्हाट इज़ टास्क शेड्यूलिंग, व्हाट इज़ इवेंट व्यूअर, व्हाट इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइन लैन, what is ISA server, define client, what are dynamic IP addresses, what do you mean by network security, how do file can be shared on network, explain encryption। और उसके बाद है जी what is scope of IP addresses, what is DHCP। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे रिमेनिंग पेपर होगा हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन इस पेज पे हैं, फर्स्ट पेज पे। और सेकंड पेज पे हमारा नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ VPN, डिफाइन प्रोटोकॉल, डिफाइन एक्सचेंज सर्वर, डिफाइन स्टॉप जोन, डिफाइन एनालॉग सिग्नल, what is subnetting, explain NIC, define public IP, what is meant by standard compliance, what is meant by IP address, what is role of DNS, और what is meant by hard backup। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 37। इसके बाद जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 4 में से आपने 3 करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 2 है, कोई से 3 लॉन्ग अपने अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, राइट नोट ऑन HTTP and FTTP, and what is user account and explain type of different user accounts, and how do you share file and folder using Server 2008। Last question है क्वेश्चन नंबर 6, what is the active directory and how we can activate directory, install and configure। and next हमारे पास जो पेपर है वो है cit-352 PC सिस्टम पेरिफेरल रिपेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा जाना वो जो पार्ट बी है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें शामिल नहीं कर सका, अवेलेबल नहीं था। तो इसमें जनाब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, डिफाइन पेरिफेरल्स, व्हाट इज़ मेड बाय हार्डवेयर डायग्नोस्टिक रूटीन्स, डिफाइन CPU, डिफाइन बायोस, व्हाट इज़ एक्सपेंशन बसेस, व्हाट इज़ मेड बाय रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई, define monitors, write down the 4 component of hard drive, define PATA, what are the safety measure of using laser printers,
define working of plotter, what is LCD, define server and list its types, how keyboard work, what is the second level maintenance, write down the name of testing measurement of instruments, डिफाइंड स्कैनर। तो ये 50 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपने 18 क्वेश्चन में से 12 अटैम्प्ट करने हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन 2 है इसकी, इसमें आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। व्हाट इज़ मदरबोर्ड, डिस्कस द कंपोनेंट एंड फंक्शनल ब्लॉक यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद है जी व्हाट इज़ रैम, डिस्कस डिफरेंट टाइप इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ प्रिंटर, डिस्कस inkjet printer, its parts and common faults occur in inkjet printer while using it। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर है वो है cit-303 वेब डेवलपमेंट विद जावा। ये भी आपका जो है ना वो 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव के जो हैं आपके 10 मार्क्स हैं और बाकी रिमेनिंग पेपर के 40 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं आपने। व्हाट आर द सर्विसेज, also explain servlet types, what is web application, give example, define HTML and protocol, define inline CSS, also describe why we use CSS, define JavaScript, write down the syntax, write any 2 advantages of servlet, define a web page। एंड इसी तरह जना और बहुत से क्वेश्चन है, व्हाट इज मेड बाय वेब सर्वर। इसी तरह जना क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन द ID सेलेक्टर एंड एलिमेंट सेलेक्टर। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन JSF एंड JSP इन लिस्ट द HTML मेथड और डिफाइंड सेशन कुकीज़ है, व्हाट इज़ मेड बाय JDBC एंड व्हाट इज़ कस्टम टैग एंड टैग हैंडलर। उसके बाद जनाब आपके पास सेक्शन 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 होंगे, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना है। डिस्क्राइब HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर and also describe the basic structure of HTML table, explain the standard directory structure and Java web application, also explain jQuery। उसके बाद है जी explain what is the Java script, hide and show element of Java script। तो ये था जी आपका वेब का पेपर 303। और नेक्स्ट हमारा पेपर है, हमारे पास लास्ट पेपर है टेक्निकल राइटिंग का है। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश 311। ये भी आपका जो है ना वो 50 मार्क्स का है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। डिस्क्राइब द, पहला जो शॉर्ट है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट की अहमियत बयान करें। हाउ लिस्ट ऑफ कंटेंट हेल्प अ रीडर इन टेक्निकल रिपोर्ट, ब्रीफली स्टेट द वेरियस पार्ट ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। How communication, how recommendation are important in technical reports, what is meant by graphics elements of the report, what is progress report, what is meant by readable instruction, what is difference between formal and informal reports, what is feasibility report, write down element of technical reports, what source can be used for collection of data in technical reports, what is the importance of operation manual। Number 13 है, define persuasive report, why is a letter of inquiry written, how visual aid are helpful in presentation, what is made by bibliography, what is why determining a purpose is important preparing a technical report, or briefly write down the qualities of a writer of the technical report। लास्ट क्वेश्चन है जी आपके सेक्शन 2 के, डिस्क्राइब द एलिमेंट एंड टेक्निकल ओरल रिपोर्ट रिटर्न। अच्छा, डिस्क्राइब द टेक्निकल एंड एलिमेंट, राइट द एलिमेंट एंड टेक्निक ऑफ ओरल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉम्पैक्ट टेक्निकल रिपोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन है जी एलैबोरेट व्हाट इज़ द मीन बाय टेक्निक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो ये था जी हमारा जना वो आज के पेपर। इन पेपर्स के जना वो 2018 के 2022 के ये पेपर्स हैं और यकीनन ये पेपर्स आप स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आप इन जना पेपर्स को देख के इन पेपर्स के जना आप
पैटर्न देख सकते हैं। और इसके अलावा इन पेपर से आप हेल्प ले सकते हैं कि अगर यही पेपर तैयार कर लें तो बहुत से क्वेश्चन सिमिलर होते हैं जो आपके पेपर में आ जाते हैं अगेन एंड अगेन, और यकीनन आप इन पेपर से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।